जो बेसिकली मैं पढ़ूंगा नहीं मतलब देख लीजिएगा, वैसे अगर कहें तो मैं प्रिसाइजली अर्ज कर देता हूँ वो ग्राउंड्स क्या हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर किसी भी प्रेसिडेंट को रिविजिट किया जा सकता है। ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द बुक द लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट मानो। ये जो आपने केस साइट की पिछले ये 2018 सुप्रीम कोर्ट 578 इसमें ट्राइब्यूनल में नहीं गए थे बल्कि इलेक्शन कमीशन में गए थे। इलेक्शन कमीशन में गए थे, इलेक्शन कमीशन के बाद हाई कोर्ट में आए थे, हाई कोर्ट ने केस रिमांड किया। न ट्राइब्यूनल या आरओ नहीं था मालूम। कोर्ट नहीं। रिलेवेंट पोर्शन बता दें, इसमें कोई खास पेजेस हैं जो हम पढ़ें या सारा पढ़वाओगे हमसे? नहीं, मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक करके बता दूं। इसमें पेजेस सिर्फ बता दें। मैं पेजेस बता देता हूँ, मैंने ये नोट किए हुए हैं अपने पास। लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट एक किताब है गार्नर की, लेकिन इसमें बस पेज बता दें। मैं इसके जनाब पहला पेज है मालूम, पेज 3 मालूम देख लीजिएगा, नोट फॉर्म वाले बाकी बाद में। पेज 3 बता। ये है अप्रूवल एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ अ जजमेंट। ये मैंने अर्ज किया कि कितनी अप्रूवल जनाब। पेजेस बता दें। पेज नंबर 3 मालूम, पेज नंबर 9 है मालूम, आउट क्रिटिसिज्म एंड डिसअप्रूवल। ठीक है। पेज नंबर 40 है मालूम, 40 पल्पेबली रॉन्ग डिसीजन। ये पढ़िए नहीं, बस ठीक बता दें, हम खुद पढ़ लेंगे। 9 देन 48 मालूम, 48 देन 56 मालूम। आप वो सारे चैप्टर्स ही बता रहे हैं ना? जी बेसिकली वो रेलेवेंट चैप्टर जो हैं वो मैंने अर्ज किया। 56 एंड देन पेज नंबर 13 पे भी मालूम ये इसका वो क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट है, पेज 13 भी रेलेवेंट है इसका। देन 18। So these are all the grounds to revisit and overrule जी it. मेरी हम सबमिशन ये है कि सिर्फ ये है कि ये इम्प्रेशन जाता है और मीडिया पे इस पर रोज बात होती है कि जजेस की कॉम्पोजिशन चेंज होने के बाद फैसले तेज हुए थे। ये जजमेंट ऐसी है समिउला ब्लोच की जिसको रिविजिट होना चाहिए और इसके लिए जस्टिफाइबल ग्राउंड्स मौजूद हैं। और ये अगर ये लॉ ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट इस तरह डिक्लेयर किया जाए तो फिर ये मामला आइंदा के लिए खत्म हो सकते हैं। जो हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है उसको गाइडलाइन दी जा सकती है कि ये पैरामीटर्स हैं जिसमें आपने जुडिशियल प्रेसिडेंट को चाहे कितने मेंबर जजमेंट हो उसको रिविजिट करना है और किन चीजों को आपने कंसीडर। आपका कहना ये कि वो जो इंटरप्रिटेशन हुई है वो प्रॉपर नहीं है? मेरा कहना ये है कि वो प्रॉपर नहीं हुई और उसको रिविजिट करने के लिए ये ग्राउंड सफिशिएंट ग्राउंड हैं जिनको रिविजिट किया जा सकता है। प्रॉपर अगर अटेंड नहीं किया तो क्या वो जजमेंट इंक्योरी है? सिर्फ प्रॉपर अटेंड ना करना काफी नहीं है, उसके साथ पल्पेबली रॉन्ग डिसीजन होना, अप्रूवल ना होना उसी जजमेंट का सेम कोर्ट से, क्रिटिसिज्म आना फ्रॉम द कोर्ट एंड आउटसाइड द कोर्ट, लीगल स्कॉलर्स का, पार्लियामेंट की तरफ से डिसअप्रूवल आना, ये सारी चीजें कंसीडर होके और फिर स्टेट डिसाइसिस का प्रिंसिपल कहाँ उसकी वैल्यू मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में स्टेट डिसाइसिस जो है वो इतना फोर्स नहीं रखता। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में स्टेट डिसाइसिस बहुत फोर्स रखता है, लेकिन जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होगी वहाँ उसका स्टेट डिसाइसिस का की इतनी ज्यादा फोर्स नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक मुश्किल काम है और सुप्रीम कोर्ट अपना अगर समझे कि हमसे रॉन्ग हुआ है उसको करेक्ट कर सकती है। स्टारी डिसाइसिस का प्रिंसिपल शायद हमने अभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जिक्र किया है, पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? मैंने 3 जजमेंट्स पढ़ी हैं, जो ऑनर की पढ़ी है, जज साहब की पढ़ी है एंड जस्टिस अभी नहीं आई, अभी जनाब की आपने पहली पढ़ी नहीं जनाब की आई नहीं। वैसे माशाल्लाह यू आर्ग्यूड वेरी वेल। आई एम ग्रेटफुल। You argued before a larger bench before of this strength or no? Or this is your first experience? 5-member bench के सामने आर्गू किया। चले okay, we appreciate you are very precise and I would request others also to be very focused and precise. So thank you for your. We will take a short break and so Aji Bhandari sir, we will come back. If I can just make a request, I don't claim any preferential right of audience. Next we'll hear you. My lord, because I have to, for personal and professional reasons, I have to be back in Lahore and the motorway closes because of the fog. That's also an issue. So if your lordship can... If you've heard all this, probably they've reduced your, Mr. Khurram and Mr. Usman have reduced your work. So just more precise as you can be. I'm in the happy position of not representing anyone. Just representing myself. So and you are in the unhappy position of not being paid. not being paid. That is true, my lord. Sure. Grateful. So we will return after a while. ठीक है वो प्रोफेसर अब ये सब भी मौजूद है जी।
So we'll hear. आगे We resume तो at ऐसा करते हैं, we will hear you last. जी मैं आखिर में आऊंगा, but we resume at 2 or 2:15. Then at least 2:15. It may be even longer. Mikey can be heard first. Ji, we hear Mr. Bandari, then we'll hear Mr. Faisal Siddiqui, and then we'll hear you. And in the meantime, ये दे दीजिए इनको, पता नहीं इन्होंने देखा है. Another amicus has submitted a note. तो वो अगर किसी के पास नहीं पढ़ना चाहे वो पढ़ लें. Thank you everyone. एक छोटी सी सबमिशन मैं करना चाहता हूं. There is another serious question of law in this case, and that is with regard to the applicability of Article 63(1)(h). मेरी अपील्स में जो 63(h) के जी कन्विक्शन अगर हो जाए और 2 साल की हो तो वो डिस्क्वालीफाई होता है जब तक वो 5 साल का टाइम लैप्स नहीं होता. तो जो इम्प्यून जजमेंट है मेरी अपील्स में उन्होंने उसको रिडंडेंट कर दिया है. उन्होंने ये कहा है कि इवन इफ व्हाट डू यू वांट, आई एम सेइंग कि वो जजमेंट को सेट असाइड कर दिया जाए. आप बेशक फैक्ट्स पे आई नो यू 63(1)(h) में आप चाहते क्या हैं कि 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन हो, क्या हो? अलर्ट वो तो लिखा हुआ है उसमें, मैं तो कुछ चाह ही नहीं रहा. मैं तो ये कह रहा हूँ कि आइन को फॉलो किया जाए, उस प्रोविजन को, क्योंकि जो लाइफ हुई है. बट विल हियर यू. आपकी लाइफ हुई है? सर लाइफ नहीं हुई. No, but आते हैं लाइफ. we'll hear you. I mean, okay, the batting order we've just explained. तो चाहते हैं लाइफ हो. So, and who else is opposed to the वो सब्जवारी साहब थे. Tabzwari sir? We just want to hear your version first, then we can. Then you can also respond to maybe that may be better than just to save time. Ji. My lord, to start with, there is a writ petition pending before Lahore High Court, Lahore, and in which reply by the Attorney General Office has also been filed. And next date of hearing is 9th of January. जी जी आप इधर किस केस में हैं? which is your case here? My lord, I am in 880 of 2015. I am for the respondent number 1 and respondent number 3. नाम बता दें. Arif Hussain Arif Hussain. versus, You are for Arif Hussain. I am for Fayaz Ahmed Khan Gauri and Sajadul Hassan. एक सिर्फ फयाज Ahmed Khan Gauri अहमद खान गौरी and Sajadul Hassan. सजादुल हसन. My lord, 1 and 2. This one. 1 and 3. 3. And this is civil appeal or civil petition? Which number is it? Civil appeal arising out of Civil appeal number? 880 जी ठीक. 2015. Arising out of? Arising out of? Arising out of Election Commission's judgment. ठीक. चलिए जी बताइए. My lord, my first submission is regarding the maintainability of these proceedings. Because my lord has clubbed all the cases together. There are appeals as well, and there is a petition under 184(3) by the Supreme Court of Pakistan, and there was objection on that petition, and there was a chamber appeal. That is also fixed here. My first submission is, under what provision of law these proceedings are being conducted? Number one, are they appeal under Representation of People's Act or Election Act? I am before my lord in appeal under Representation of People's Act. But there is this 184 petition also pending. आप अपना केस चलाए ना. मैं अपना केस में लाता हूँ. My submission is कि इस अपील में my lord ने सारे की सारे petitions को क्लब किया है. भाई आप अपना केस चला लीजिए ना. Don't repeat it. We've heard that point. Sir, my lord, my submission is, are my lords exercising power under 187 or 184(3)? Please proceed with your case. My lord.
My lord, I have 4 submissions. जी. Number दे दे petition का. Civil Appeal 880. 880. Civil Appeal 880. Respondents 1 and 3. जी. My first submission is the court of law mentioned in Article Supreme Court in its appellate jurisdiction. I'll just submit the brief as well. जी. जी. The declaration mentioned under section 160 or section 62(1)(f) is outside section 42 of the Specific Relief Act. Because Specific Relief Act puts a certain conditions to obtain declaration. It has been held by the superior courts that the proceedings under section 42 are not exhaustive. Courts can issue declaration without satisfying the conditions under section 42. I rely on 2 case laws. One is AIR 1967 Supreme Court, 436. AIR 19? 67 Supreme Court, 436. जी. 11. 11. 11, my lord. जी. It says, in our opinion, section 42 of the Specific Relief Act is not exhaustive of the cases in which a declaratory decree may be made, and the courts have power to grant such a decree independently of the requirements of the section. The same view has been expressed by Mr. Justice Mansoor Ali Shah while sitting as judge of the Lahore High Court in PLD 2010, Lahore 583. G. That is para 24, my lord. In the Indian Supreme Court judgment, My lord, you have read this line that section 42 is not exhaustive. not exhaustive. So let me just ask the question. Is it not exhaustive in terms of the Specific Relief Act or exhaustive with regard to constitutional jurisdiction as well? I mean, you've just read that line and I can go along with that. The section 42 may not cater for all eventualities. My lord. The question here is not just that, but it is a question whether the declaration that is being envisaged, My lord. can it be a declaration by a constitutional court, for instance? It can be declaration by constitutional courts as well. Does this judgment say that? The one that It does not talk about constitutional court, but the judgment now I am referring, it talks about constitutional court as well. ठीक, नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है इस पे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस पे नहीं है। अच्छा, 42 आपका मतलब है तमाम कोर्ट्स पर एप्लीकेबल? मैं ये कहता हूँ कि 42 is applicable to civil court, but civil court can also give declaration without satisfying the requirement of section 42. Similarly, other courts can also give declaration. the High Court in this case was following the Supreme Court precedents already settled. So is there a Supreme Court judgment on this point? There is a Supreme Court judgment, my lord. ठीक, अच्छा next point आपका? I will read para 24 of Lahore's judgment. That is taking cognizance of the High Courts are bound by judgments of the Supreme Court. So there is no question about that. The High Court had to follow it. But now we are the Supreme Court and a larger bench. My lord. Ji. Now,
The next point. Next point is, a court of law has not been defined in Article 62 or anywhere else in the Constitution. But Superior Courts has held that it's a court of plenary jurisdiction. That is PLD 2017, Supreme Court, 265. Can you repeat the citation? PLD 2017, Supreme Court, 265. That is at page 490. 490. 490, my lord. Gee. It's in the second part of the page. It starts with the expression "a court of law" has not been defined in Article 62. Which placidum are you referring to? Double S, my lord. Double S. Gee. From the middle. Gee. Read it. The expression "a court of law" has not been defined in Article 62 or any other provision of the Constitution, but it essentially means a court of plenary jurisdiction which has the power to record evidence and give a declaration on the basis of the evidence so recorded. Such a court would include a court exercising original, appellate, or revisional jurisdiction in civil and criminal cases. But in any case, a court or a forum lacking plenary jurisdiction cannot decide question of this nature, at least when disputed. What is plenary jurisdiction? Plenary literal meaning is a court exercising full powers. All the powers. Plenary jurisdiction means where the original jurisdiction has been exercised under section 42. If you mean to say that section 42 of the Specific Relief Act can be exercised by the High Court under Article 199 No, my and lord. 184 and 185 by the Supreme Court. No, my lord. So declaration means for all such type of declarations, the case must be under section 42 or not. It need not to be under section 42. Then- That is my submission. Then how the declaration can be granted in any other law? Declaration can only be granted by election tribunal. That is my submission. It means that it exercises the jurisdiction under section 42. Not under 42, under Representation of People's Act or Election Act. That is the only form. And after recording evidence or without recording evidence? After framing issues, now I'll come to the power of the election tribunal. This can be exercised by the High Court directly Cannot be exercised by and the the High Court. Supreme Court directly. No, my lord. Supreme Court in appellate jurisdiction. Your last argument is in contradiction with the judgment you have relied. 490 पे आइए दोबारा. My lord. जहाँ से पढ़ा था उससे दो लाइनें ऊपर. Even the election tribunal. Even the election tribunal, unless it itself proceeds to give the requisite declaration on the basis of the material before it, would not disqualify the return complaint where no declaration, as mentioned above, have been given by a court of law. Now, I will demonstrate how I say election tribunal is court of plenary jurisdiction. नहीं तो बताएं, provisions तो बताएं ना। कहा कि वो नहीं है, वो भी नहीं कर सकता unless by the court of law. We explain the formation and the power of election tribunal. आपका आर्ग्यूमेंट ये हुआ ना कि सिर्फ प्लेनरी जुरिस्डिक्शन के कोर्ट्स डिक्लेरेशन दे सकते हैं और आप कहते हैं कि अदर देन द नॉर्मल रेगुलर